and once again welcome to the second day of class 10 Odia medium school advanced physical science 4-day online classes. So yesterday we had discussed the Arrhenius theory of acids and bases, and also we discussed how a salt has either an acidic property or basic property. Sometimes it may be completely neutral, salt coming from a strong acid and strong base, virtually two cations, sodium, potassium, and virtually 7 anions. So the combination of any two of them will have such a salt. pH will be exactly 7. But for a salt of weak acid and weak base, you can call it nearly neutral, but it may be mildly acidic, mildly basic, depending on which has a greater strength. Both are weak. Which has a greater strength? All these are due to hydrolysis of salt. The salt undergoes a very partial hydrolysis that upsets. In case of a salt of strong base and weak acid, we find it is basic in nature. In case of salt with strong acid with weak base, we find it is acidic in nature. All these things we have discussed. I think Mr. Omkar, you have already uh, visited the uh, video, right? Yes, sir. Okay. What today I'm planning to do, mm, to have some other things. But before that, let me tell you some other aspects which Bismaya wanted and I also wanted to quickly finish this thing. You know, indicators, I have given you these files, but just I am discussing. Litmus is one of the oldest natural indicators which is extracted from some plant belonging to the light chain category, and it's water solution in neutral water, pure water. It is purple, patala, and in acidic solution, blue litmus turns red, means it is red. Here, we look to this portion, and in basic solution, hello, you'll go to your JG is taking a class. You see, Mama is there. Okay, sleep. You know what? You are so tired. Then sleep. You see how I'm taking class. Okay, not see, but listen. Hey, American girl, sleep. Okay. So let me share my screen. Have I shared my screen? No, sir. Huh? Yes, sir. I guess, sir. Okay. So welcome those who have started viewing from the YouTube directly in the morning and in the evening. So let me welcome them. Welcome. And it's going to be a very interesting program today.
Let me quickly finish that litmus in the basic solution it turns blue. Red litmus turns blue means in basic solution it becomes blue. And you forget about its structure. This is an organic uh, dye, ranjaka, and that gives color, different color in different pH. Phenolphthalein is another very useful indicator. In acidic medium, it is colorless, and in basic medium, it is pink. It's pink. So this is used for the titration experiment. You add a drop of phenolphthalein. Supposing you have taken in the conical flask, I think we have discussed about titration experiment, have we, in our programs? No, Do sir. you faintly remember? Do you faintly remember or don't remember? Huh? Have I shared my screen? No, sir. You don't. তাহলে কৌছ yes sir বলি। Now have I shared my screen? You guys are, Yes, sir. I was sure that I have not shared my screen, but you are saying, I think I thought, I heard that someone saying yes. Now, we'll be talking about the acid-base indicators a little bit. Litmus is a very popular and simplest indicator that is extracted from plants belonging to the light chain category. And in neutral solution, it is purple, patala. But in acidic solution, it becomes red. Red, blue litmus turns red. And in basic solution, it becomes blue. Red litmus turns blue. And you find in the neutral, it becomes its original color, purple. But as you continue to have more and more basic solution, pH becomes greater and greater than 7. As you know, pH becomes greater than 7 means you are becoming more and more basic. If it is less than 7 means it is more and more acidic. So more it is acidic, it will become red to deep red and so on. More it is basic, it becomes blue. And the structure of this is not required. This is a dye. It's not required. And phenolphthalein is another very interesting indicator in which the base solution gives pink and acid solution becomes colorless. And while we do titration experiment, have we discussed about titration? Rathe? Okay, we'll do No, that sir. today. Okay, we'll do that today. And we'll have uh, today's program centering around solutions to stoichiometry, molarity, and how we tackle problems. We have done stoichiometric problems involving mass, mole, mass, all these things without involving perhaps solution, molarity. I think we did some problems on molarity, did we? Yes, sir. But titration, we didn't talk much about titration. What is the role of titration? I will tell you. Now, methyl orange is another indicator which is used in the laboratory. In acid solution becomes red and in base it becomes yellow. Uh,
those who are watching from YouTube, are you able to watch a video? It is saying your video is not receiving enough video to YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. As such, viewers will experience buffer something it is writing. Uh, so anyway, we are not have any alternative. Whatever YouTube will do, that will be the final thing. So let's maybe because of the poor connection. Okay, so this is another methyl arrange, and you also know the universal indicator, which is available in the form of pH paper and also solution, which is a mixture of several indicators: phenolphthalein, its sodium salt, methyl red, bromothiamyl blue, imyl blue in alkali, in propanol solution. So this mixture is a universal indicator, and at the neutral range of 7 nearby it becomes green. As you continue to become more and more basic, becomes bluer and bluer uniform. It becomes purple, then blue finally. And if you go to the acidic direction, as you continue to reduce pH, you'll find it become yellow, then orange, then red. So this will approximately tell you what is the pH by tallying, matching the color in the pH paper when you dip a pH paper which is soaked with universal indicator, or you add 2 to 3 drops of universal indicator solution to any solution. The color matching will tell you the approximate pH, not the exact pH. Now, this is the titration experiment I will be talking you. Now, let me use my copy. This question will be doing on titration. That was a question I got from the last year's INJSO, Indian National Junior Science Olympiad. Uh, they are getting so very interesting questions that once you prepare in a proper manner, you have no chance for that. You have a chance to appear in class 11, 12 individually. National Science Olympiad for chemistry, for physics, for biology, for astronomy. So there are individual. So we also guide people not only to achieve NEET, IIT, but also to get into uh, National Science Talent Search Examination. Junior Junior Olympiad is taking place in November. So it's if you have not applied, it's not possible now to appear. So just we will be having some insight into how problems can be handled so easily. Now, let me use this to tell you about titration. Titration experiment is very, very interesting, that in a conical flask, you take certain volume of
a solution that is called analyte. And add a drop of indicator from the bottle of indicator. Say, for example, here we take 25 milliliter of, say, a certain molar solution of sodium hydroxide. We do not know what is the molarity of that sodium hydroxide solution. We want to find out the molarity of the unknown sodium hydroxide solution. And how to take exactly 25 ml? There are in the market, you find so many pipettes. The device through which you will here there is a mark. Here it is written 25 ml. So many pipettes of different capacities, 10 ml pipette. These are called pipettes. And in America, they call PET pipette. So you have to draw nowadays in our time or even today, when you conduct experiment in your +2 level maybe, you will be sucking by using your mouth. Very, very dangerous. Supposing by sucking, the acid goes into your buccal cavity, then it will definitely have some damage. So nowadays, the pro pipette is available. When you connect it and push it and then slowly release it, you will find it will rise, 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 and you continue to lift this solution from the bottle, that is called the stock solution, uh, till this level is reached. You have to see the lower meniscus. Water due to surface tension will have a concave, and to you it is concave uh, meniscus. The outer surface is called meniscus. You will be learning about surface tension, and in mercury, supposing you have a mercury column, the meniscus is convex. If it is a water solution, it will be slightly concave. So see that the lower meniscus touches this line. There is a line engraved in that. Then that will be 25 ml. Then slowly remove this from the stock and transfer it here from the pipette by pushing again the pro pipette. Or we were nowadays people, what we asked to do, just to release. They bring by putting a thumb, dry thumb on that tube pipette, and very carefully they transfer to the conical flask, and then they release. They remove their finger, automatically it rolls down, and when it finished, then give a tap. Don't blow, because there is a little amount, maybe 0.05 or less than that, volume of solution will be sticking towards the end of that pipette. That's the tip, the pointed tip. So that is excluded from the calculation, from the graduation, or from the calibration. That is excluded. So don't blow it. Give a tap, 3 times tap. That is 25 ml. Or if you want 10 ml pipette, you can use it. So you have taken 25 ml, say for example, sodium hydroxide solution here. And we do not know what is the molarity. For that, we have to take another device called burette. In burette, you have to feel there is a stopper here, you can control by yourself. There is a calibration 1, 2, 3, 4, 0 starts
up to 50. So you fill completely, or if you have not filled, then record the initial reading. Supposing it is here, you thought, okay, I can do one experiment, so I will need only 20 or 25, so or 30. So I don't want to fill completely to 0. So you record, supposing it is here, record the initial reading is 15.3. Then you just put it above this analyte with a stand, sorry. By means of a stand, you allow that, this is called burette. American English is simply burette, no TT. And in the burette, you fill the other solution with which you will react or titrate. This solution is called titrant. This is analyte, this is titrant. Now, after fixing the burette just above the analyte, you add a drop of indicator. I have already told you, you add an indicator. For example, you add phenolphthalein. I give you a specific example. What color will you will get? Soumya, Swayam, phenolphthalein गोटे ड्रॉप की 2 ड्रॉप पकई दियो ए बेसिक सॉल्यूशन एटा सोडियम हाइड्रोक्साइड पकई दियो तापर सर टिके सेक गोलापी ହେଇଯିବ गोलापी हे जियो ହେଲା ପରେ ଭଲ टिके सेक कर दियो चारिआड गोलापी हे जिवो बेसी जोरे सेक कले से सॉल्यूशन रो किछि पिछिड़ी पळे जिवो डोंट डू दैट something has happened to my YouTube streaming forget about it stream health the stream health is poor but guys anybody is watching or not that's what oh yeah anyway it must be in record and maybe later they will fix it and they will do that so we are not ଚାଲିଛି ବା ଆରେ ଏଇଟା ବିସ୍ମୟଟା ରେ ଏଟା ବିସ୍ମୟଟି ଓକେ सो आमे एटा हला ऊपर जो निया हला सेटा हला टाइट्रांट एटा हला एनालाइट टाइट्रांट रे जो एसिड नब धर एठी एसिड बेस टाइट्रेशन करूचो टाइट्रेशन दीटा रिएक्टेंट भितरे करा जाय एसिड बेस टाइट्रेशन अछि तार उद्देश्य होची टू फाइंड द concentration of an unknown solution suppose एठी हमरो बेस सॉल्यूशन टा अननोन अछि अननोन माने तार कंसंट्रेशन हम जानि नै केते मोलार लंको केमति करबा जानि नै करो तार कंसंट्रेशन मापिया कहले हम गोटे स्टैंडर्ड एसिड आनिया पड़ियो एथरे जो धर अछि एथरे एक्जाक्टली n by m by 10 ताको कहंती डेसिमोलार सल्फ्यूरिक एसिड अछि H2SO4 अछि m by 10 सल्फ्यूरिक एसिड आ भितर पुरैछु आर कंसंट्रेशन टा आगुरु फिक्स अप हेकिर अछि किंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड ता भारी गंडगोलिया तार कंसंट्रेशन सब बेले चेंज होथाय पानी से टाणे दा फल रे ताकू भी वेइंग मेथड रे करी हुएनी कारण से वे करू करू सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट को एतरे गुडा पानी पस जाइथियो हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक पेशेंट से डिजल्व कर जाइथियो तेनु ताकू सब बेले टाइट्रेशन जरिया रे बाहर करा जाए तार मोलारिटी जते बेले एक्सपेरिमेंट करबा को जाउचो सोडियम हाइड्रोक्साइड तमे यूज करबो आ गुटे रिएक्शन रे जोटा हमें करबा सेटा आगो टाइट्रेशन टा कोन मु बुझौछि तबे तुमे
এটা তো পিঙ্ক হয়ে গলা। तुम्हें ड्रॉप बाय ड्रॉप आरंभ कर पकेबा। ड्रॉप बाय ड्रॉप पकेकरी सेक करथा देखिबो बेसी जदि 2-4टा ड्रॉप पड़ी गला से जो जगह रे पड़िला से जगहटा कलरलेस हो जिवो, किंतु प्रकृति रे सेक कर देले से पिंक गोलापी थिबो। आस्ते आस्ते गोलापी कलर फेंट हो जाउथबो। ड्रॉप बाय ड्रॉप पकउथबो, गोटे समय आसीबो सिंगल ड्रॉप पकेलाठू से सांगे सांग कलरलेस हो जिवो, कारण एसिडिक सॉल्यूशन रे कलरलेस। ता माने कोन हला से सिंगल ड्रॉप रे अधा ड्रॉप एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन कला, इक्विवेलेंस पॉइंट को आसिला, आउ अधा ड्रॉप रे जो 2-4 बुंदा एक्सेस रहिला सेटा ताकू एसिडिक कर देला, सेटा नेग्लिजिबल। ताकू टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे अलाउ करा जाए, कैलकुलेशन रे किछ प्रॉब्लम करे नहीं। से सिंगल ड्रॉप रे कलर थिला पिंक, संगे संग कलरलेस हो गला। तमे कहबे केमती हला, ताल तो एसिड अधिका हो गला ना। एसिड टिके गोटे ड्रॉप की मे बी हाफ ए ड्रॉप, गोटे ड्रॉप रे माने इवन 1/4 ऑफ ए ड्रॉप अधिका हिथिबो, सी किछि नो कैलकुलेशन रे विशेष किछि पकेइबन। तेणु सेति पई कोन करा दिबो जे एंड पॉइंट आसिया पर्यंत या कोनती एंड पॉइंट दी एसिड एठी ए केस रे एसिड सॉल्यूशन लेली, उल्टाटा भी करि पारथांती। इज added continuously from the burette, एसिड टाला के एठी सेटा टाइट्रेंट हेछि ऊपर अछि बोली, सेटा जदि तळे थांता सेटा एनालाइट हे थांता। constantly continuously from the burette to the analyte solution in a conical flask, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in conical flask till the color changes abruptly in one drop excess। टाइट्रेंट गोटे ड्रॉप एक्सेस रे सेटा गोटे ड्रॉप एक्सेस नुहे, मे बी 1/4 ऑफ ए ड्रॉप एक्सेस थिबो, बाकी 3/4 यूज हिथिबो तार न्यूट्रलाइजेशन करिया पई। सो कलर विल चेंज। इफ इट इज फेनोल्फथालीन, यदि तुम फेनोल्फथालीन नहीं थिबो ताले कलरटा चेंज हबो, पिंक रु कलरलेस हो जिवो। एक्चुअली हर एक्सपेरिमेंट रे पिला माने भूल करते, टिके अधिका हो जाए, जानी पारंतनी। तेणु सेटा गोटे रफ रिडिंग निया जाए, जना पड़ी गला जे खाउची फाइनल इनिशियल रीडिंग थिला 0 0 को तमे आनी न, गोटे टेबल करिवो इनिशियल रीडिंग थिला धरो 2.57, फाइनल रीडिंग आसिला जेतबेले एंड पॉइंट आसिला कोनती फाइनल रीडिंग, एंड पॉइंट आसिले एटा धरो आसिला 27.2, डिफरेंस केते हला, उल्टा डिफरेंस आसिला, ताले तार ताहले ता कोनती टाइटर वैल्यू केते आसिला, 12 रु 7 गले 5, एठी 6 रु 2 गले 4 2, एतिकी एमएल एक्चुअली खाइला, ताकू कोनती टाइटर वैल्यू। टेबल करिकरी तुम जानी गलो जदि रफ रीडिंग हेतिबो एटा 24.7 हे जैथिबो, तो जानी पारलो जे मो हाथ रु टिके बेसी पड़ी गला। इन किछि कथा नै, आउ थरे करिवो तुमे जेतबे देखिवो 20 मिलीलीटर ऐड कर देलनी, तापरे धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ऐड करिवो, चेक करथो गोटे ड्रॉप चेक करथो, तेणु ठीक समय रे तुम पाइ जिवो 24.5। आउरी कंफर्म करिया को आउ दीटा रीडिंग नै जाओ। सो आमे यूजुअली रेकमेंड करू तीनटा कंकॉर्डेंट रीडिंग, एठी फिजिक्स भलिया एवरेज करा जाय, हमरो तीनटा जाक समान होबा पड़िबो, ताकू कोनती कंकॉर्डेंट, कंकॉर्डेंट नुहे, कंकॉर्डेंट रीडिंग दरकार, सेम रीडिंग। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट रे टिके एपट सेपट हबो, पांचटा एक्सपेरिमेंट रे तार एवरेज निया जाय, हमरो एठी तीनटा जाक सेम आसीबो।
जदि सेम न आसिला ताल सेटा भी रिजेक्ट हला जो पर्यंत सेम न आस्तिबो चलतिबो गला वर्तमान चलो हमर अंक को एटा टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट जानलो तो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे गोटे पिपेट यूज हुए पिपेट रो काम होची ट्रांसफर करिवा transfer a given volume, a fixed volume of certain solution from the stock to the conical flask, and that will be called analyte. And burette रे निया जाए the other complementary एटा जदि एसिड जदि तळे नेलो ऊपर बेस बेस जदि तळे नेलो ऊपर एसिड तळे जदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेलो ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट तळे जदि रिड्यूसिंग एजेंट नेलो ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो आमे देखुचे एसिड बेस टाइट्रेशन आ रिडॉक्स टाइट्रेशन भी परिबो एका जिंस एटी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन नबो एवं जदि पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एटी नबो तेरे एसिड मिसी थिबो कि एथरे सॉरी एथरे एसिड टिके मिसे दबो एसिड फैड हबो एटा प्योर पोटेशियम परमैंगनेट तार मोलारिटी तो जणा अछि नबो ता पे किछि इंडिकेटर दरकार नै पोटेशियम परमैंगनेट वाज ए सेल्फ इंडिकेटर जेते एंड पॉइंट आसी जीवो सब तक फेरस फेरिक हे जीवो जेतु 25 मिलीलीटर नैचो गुड एक्स्ट्रा ड्रॉप पकेला माने द एंटायर सॉल्यूशन विल बी पिंक परमैंगनेट पई कोनोसी इंडिकेटर दिया जायनी किंतु तुम जदि पोटेशियम डाइक्रोमेट्री करिवो ताले फेरस सल्फेट रे गोटे 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 टर्सरी अमीन डाइफिनाइल अमीन ट्राइफिनाइल अमीन गोटे एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड तार अछि गोटे ड्रॉप पकेइबो पकेले गोटे कलर आसीबो तापरे जे एंड पॉइंट आसीबो से कलर पळेबो ग्रीन कलर आसीबो से ग्रीन कलर टा डिसअपियर करिवो जेतेबेले एंड पॉइंट आसीबो सेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट पाई पोटेशियम डाइक्रोमेट रे कलर होची ऑरेंज डजंट मैटर सी किंतु फेरस सल्फेट रे पडिथिबो कोन ना गोटे बुंदा कि दी बुंदा गोटे डाइफिनाइल अमीन पडिथिबो सेथरे रंग ग्रीन हे जइथिबो तापरे एतले पकी पकी कलरलेस हे जिवो सेमती आयोडीन संगरे सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन जेतले करिवो टाइट्रेशन आयोडीन सॉल्यूशन अछि जदियो आयोडीन टा गोटे सॉलिड किंतु से जल रे किछि परिमाण रे सॉल्युबल बहुत गुडा को रिएक्शन रे आयोडीन बाहरे बहुत गुडा को रिएक्शन रे आयोडीन बाहरे आज तुमको मु सब प्रकार रो प्रॉब्लम तुमको अति सुरखुर रे करेबी जा फल रे तुमे प्लस 2 गला बेलू गोटा को डरी बनी पिला माने डरी जानती पूरा एई पार्ट टा छाड़ी दियंती मोल कांसेप्ट एवं स्टोकियोमेट्री पर्टिकुलरली सॉल्यूशन स्टोकियोमेट्री इन्वॉल्विंग मोलारिटी नॉर्मालिटी आजिकल तो मु नॉर्मालिटी मु कहूनी इक्विवेलेंट कांसेप्ट तो मुको कहिची नो सर अरे तुम हैं नो सर नो सर हाँ इक्विवेलेंट कांसेप्ट मु आजिकल कहूनी कहना पाश्चात्य देश रे एठी अमेरिका रे ये रे से इक्विवेलेंट कांसेप्ट के पढौ ना सेटा आउटडेटेड हे गलानी माने नॉर्मालिटी नॉर्मालिटी कहिची नो सर नो सर मोलारिटी खाली कहिची नहीं मोलारिटी कहे आज्ञा सर यस सर मोलारिटी आउ परसेंटेज स्ट्रेंथ मोल फ्रैक्शन W by V नुए मोल फ्रैक्शन भी कहे मोल फ्रैक्शन वेरी गुड एटा के कहला वैभव बोधे कहला ना सर उनका ना रथे यस सर रथे कौन तमे पिठा पिठा करी खाउछ आ मुक किछि दउनो सेठी काली काहे की जॉइन कॉलोनी है सर अष्टमी पूजा थिला तो माने बारंबार जीवा पड़थिला से मैं यूट्यूब रे जॉइन कर दे ओके वेरी गुड कोई बात नहीं तो यही हला तेणु एबे कौन करिवा एतक जानला परे आमर रिएक्शन रो इक्वेशन टा लिखिबा आमर उद्देश्य हला जे अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रो मोलारिटी बाहर करबा चलो इक्वेशन लिखि बैलेंस करबा जे कोन से रिएक्शन माने बैलेंस न होले ठीक इक्वेशन न लिखिले से तो बैलेंस हेई परिबोनी तेणु एठी 2NaOH कले एठी 2 वाटर कले हे गला तमने 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड खाउची 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ओके हमर जो रिजल्ट बाहरला हमें केते नैथिले सोडियम हाइड्रोक्साइड रो वॉल्यूम केते नैथिले केते ml 25 ml 25 ml हमें पिपेट यूज करिकी सेटा फिक्स्ड 10 ml जदि नै थाते 10 मिलीलीटरिया पिपेट से भी फिक्स्ड नै नेले आ सोडियम हाइड्रो एटा हला वॉल्यूम
धर एटा V1 सोडियम हाइड्रोक्साइड रो कंसंट्रेशन हम जानिने M1 धर कंसंट्रेशन इज अननोन हम जानिने M1 एसिड देखिबा एसिड खाइला केते ना 24.5 ए जो इनिशियल रीडिंग एतिकी थिला फाइनल रीडिंग एतिकी थिला हम टी चेंज कर दो हम पाखा पाखी आसी गला हे टिके चेंज कर दो हम एटा गुटे चेंज कलो ताको 20 करिया को चेष्टा करिवि तबे 22.3 13 रु 7 गले 7 नहीं 7 6 13 एठी 11 रु 2 गले 9 19.6 करम ए पाखा पाखी आसीओ कल करेक्शन कल এটা ইনিশিয়াল রিডিং এটা ফাইনাল রিডিং এটা জিরো থিলে ଆଜ୍ଞା ସାର୍। এটা ହେଇଥାନ୍ତା 19.6 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନିଶିଆଲି କିଏ ଯାଉଛି ଆଉ ପୁରେଇବାକୁ ତ ମୋର ହେଇଯିବ ଯେ 50 ମିଲିଲିଟର ତ ଦେହରେ ଅଛି ମୋ ଦି ତିନିଟା ରିଡିଂ ହେଇଯିବ ମୋର ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କେୟାରଫୁଲି କରିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଜୋରରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି କି ଛାଡ ମୁଁ 2.7 ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ହେଲା ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କୁ କହନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖିଛି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ the acid is added to till the color change ए कलर चेंज करवाटा कहते एंड पॉइंट सेट सरी गला आ अधिक ऐड कले भूल रीडिंग हो माने जो डाटाटा नबो सेटा भूल अच्छा तेणु सल्फ्यूरिक एसिड खाइला केते धर V2 खाइला हमर ब्यूरेट रीडिंग रु बाहरले 19.6 लिखिबो आ ए डिफरेंस लिखिबो सेटा टेबुल रे रहला 19.6 ml खाइला आउ आमे नेइचे गोटे कंसंट्रेशन किंतु नोन हवा दरकार सेटा स्टैंडर्डाइज करिक रखा हिच आमे जानिछु सल्फ्यूरिक एसिड जोटा आमे यूज करू सेटा स्टैंडर्ड ताको स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड बा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जार कंसंट्रेशन ऑलरेडी डिटरमिन हेइची तेणु तार मोलारिटी हला n m/10 m तार कंसंट्रेशन मोलारिटी हला तेणु वर्तमान देखो आमे आगुरु जानिचे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी इज इक्वल टू के कोइ परिबो वॉल्यूम ऑफ द पानी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट हमें करिचे एटा माने पका स्वयं विस्मय गोटे सॉल्यूशन रो वॉल्यूम पानी और वॉल्यूम हला 2 लीटर तार मोलारिटी हला m/10 तेणु ये दीटा 1/10 संगरे गुणिले हेटा कोन हबो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 यस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काहे कि तुमको मने पके दउची धर 2 लीटर ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड अछि 2m रो अर्थ होची गोटे लीटर रे 2 मोल अछि ताले 2 लीटर रे 2 दुणे 4 मोल अछि ता माने हमें आगुरु करथिलु वॉल्यूम ऑफ द पानी ऑफ सॉल्यूशन इनटू द मोलारिटी विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेमती हमें जेहेतु अंक करबा हीरो मार्का तेणु वॉल्यूम इन मिलीलीटर जदि संगरे मोलारिटी गुणिबो ताले कोन भारिबो नंबर ऑफ मिलीमोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 नंबर ऑफ मिलीमोल्स भारिबो हैला तेणु मिलीमोल्स रे अंक करबाटा इजी हे जाए लास्ट को मिलीटा को मारी दबो धरिबो बंधुक मर्डर कर दबो मिली को बाय डिवाइडिंग 1000 बुझिलो विस्मय आज्ञा सर तो जदि वॉल्यूम टा मिलीलीटर देथिबो मोलारिटी गुणिले सेटा नंबर ऑफ मिलीमोल्स भारिबो तेणु ऐड करिया पे हेले कोन करिया के हेले मिली रे कले भलो तेणु 0.005 0.03 एडा को ऐड कला को कोठी जीरो एपट सपोर्ट हे जिवो एमती 3 5.5 एडा ऐड करिया को इजी हबो सो मिलीमोल्स रे करबाटा बेटर अंक कला बेल को तेणु चलो आमे एठी को जीवा हमर 2 मिलीमोल स्टोकियोमेट्री कहूची 2 मिलीमोल खाऊची 1 मिलीमोल 2 मोल 1 मोल 2 मिलीमोल 1 मिलीमोल अच्छा चलो जार दीटा जाक जना पड़लानी कार दीटा को जना पड़ुची एसिड रो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रु 19.6 पाई गलु एवं तार मोलारिटी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हेके अछि तेणु तार केते मोल अलगा जगह रे करबा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
अलगा जगह रे करबा इज इक्वल टू 19.6 into 1/10 केते 1.96 मिलीमोल। अच्छा तेणु जदि 2 मिलीमोल 1 मिलीमोल खाऊची 2 मिलीमोल एपटू जीवा आमर खर्च होईची 1.96 मिलीमोल खर्च होईची ताहले केते खाइथिबो तार डबल 2 into 1.96 केते हला 212 2 रखला 1 2 9 18 19 रखला 1 2 1 2 3 एतिकी मिलीमोल खर्च होईची सोडियम हाइड्रोक्साइड किंतु केते तार वॉल्यूम केते 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 मिलीलीटर हमर सोडियम हाइड्रोक्साइड नैथिले पिपेट रे 25 केते मिलीलीटर तेणु 25 जदि मिली जदि मिलीमोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहरी गला तार डबल केते ना 3.92 ml 3.92 मिलीमोल आउ तार वॉल्यूम होची 25 ml ताहले कोन हबो मोलारिटी इनटू मिलीलीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ताहले मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट और एठी जदि नंबर ऑफ मिलीमोल्स हेले एट नंबर ऑफ मिलीमोल्स आई एम से मिलीलीटर नैछि माने मिलीमोल्स तेणु मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाई मिलीलीटर माने वॉल्यूम खाली लिखुची मिलीमोल्स बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर सो केते हबो ताहले सोडियम हाइड्रोक्साइड रो मोलारिटी केते हबो तार नंबर ऑफ मिलीमोल्स होची 3.92 एवं तार वॉल्यूम निया हिची 25 ताहले केते हबो हर हर सर 0.1568 बेले बेले एतिकी एम और मोल्स पर लीटर जहाँ गुटे लिखिबो मोल्स पर लीटर बा एम किंबा ताकू हीरो मार्का हिसाब रे 5.68 इनटू एम बाय 10 भी लिखि परिबो सब एमती बेले बेले डेसिमल माने साइंटिफिक वे रे एमती लिखा जाए हैला एई होची जिंस ए सेटा को तुमे सबु एक्सपेरिमेंट पाई नहीं पारिबो रिडॉक्स एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल मु गुटे अंक कर व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m ferrous sulfate solution acidified नहीं acidified टा परे हमें करिबा आगो नहीं जीवा के व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m ferrous sulfate solution of will be completely reducing or will completely reduce a 100 ml of m by 5 potassium permanganate solution in acidic medium এটা ଗୋଟେ ରିଡକ୍ସ টাইଟ୍ରେସନ ଦେଇ ଦେଲି तीनटा डेटा दिया है KMnO4 रो वॉल्यूम दिया है पानी वॉल्यूम तार मोलारिटी दिया जाइए एवं फेरस सल्फेट रिडक्टेंट एटा हला रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट आरे एटा हला ओए वर्तमान आम एसिड बेस टाइट्रेशन करूने रिडक्स टाइट्रेशन करूचे एका प्रिंसिपल एका फेरस सल्फेट को आनिकी धर रखिबा एनालाइट करिकरी तळे एवं ऊपर ब्यूरेट रे नै जिबा परमानेंट सॉल्यूशन आगो 25 मिलीलीटर नहीं सारा पर टिके एसिड ऐड करबा किंतु पोटास फेरस सल्फेट 25 ml अछि नैछि एसिड टिके सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करबा धीरे 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 ऐड करबा तुम तो कहिछि पोटेशियम परमैंगनेट निजे गोटे इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर सेटा एटा तबे केते वॉल्यूम ऐड करिया पड़छो धर मु फेरस सल्फेट रो मध्य स्टैंडर्ड करिकरी मु आगुरु जानि छि तेनु तमे खाली टाइटर वैल्यूटा दबो करि परिबोनी अरे करि परिबो ना नाही यस सर आगो बैलेंस करिया पड़िबो मु तो सिखेइछि तुमको बैलेंस करिया पड़िबो न किछ करि परिबो तुम सेति पई KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड माने सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइड माने सबल सल्फ्यूरिक एसिड HCl नो बिकॉज़ क्लोराइड आयन इज ए गुड रिडक्टेंट से पूरा पळै जिवो क्लोरीन हे जिवो
ତେଣୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଇଟା ଦବ କଣ କିଏ କହିପାରିବ କଣ ଦବ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ୱିୟର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି हेलो अच्छा यूट्यूब रे जी देखुच कि देखुचंती टिके मते चैट कल मु टिके यूट्यूब रे आज टिके गंडोलिया अछि ठीक चलची तो माने मु कहूनी विभव वैभव कि हमर जो माने जूम रे अछंती तांकू मु बाहर लोक ठारू गोटे चैटिंग चाहूची गोटे चैट कर दियंतु हां हां ठीक चलीची देखा जाउची फिर लिखि दियंतु यस ओके एतिक लिखि दियंतु चैट बॉक्स रे ए ताकू कौन हबो कौन प्रोडक्ट हबो कहलो स्वयंजीत सर हां सर इसमें फेरिक सल्फेट प्लस सेम कोई आउ स्पेक्टेटर गुडा को पोटेशियम सल्फेट प्लस प्लस MnSO4 एम हां एमएन टा स्पेक्टेटर नो एटा +7 रु +2 को आसी प्लस आज्ञा कौन फेरिक प्लस सल्फेट फेरस टा फेरिक फेरिक होउची सल्फेट प्लस वाटर आज्ञा त माने एठी प्लस वाटर परमांगनेट टा +7 रु जाउ खसुची +2 को आउ फेरस टा +2 रु जाउची फेरिक तो आकू बैलेंस करिवो को मेथड रे बैलेंस करिवो तेबे जानि परिवो भाग माप कोन फेरस सल्फेट होउची रिडक्टेंट आउ पोटेशियम परमांगनेट होउची ऑक्सीडेंट सेई तार भाग माप जानिबा पड़िवो केते रे केते सेटा जानि गले आउ किछ दरकार नै तापरे तबे मोलारिटी संगे वॉल्यूम गुणी देले जार दीटा को डेटा अछि तार मिलीमोल्स जणा पड़ जिवो बा मोल्स जणा पड़ जिवो तापर भाग मापरू आरटार केते मिलीमोल्स जणा पड़ जिवो एवं जणा पड़ले गोटा देइथिले तार मोलारिटी देइची वॉल्यूम बाहर जिवो वॉल्यूम देइची मोलारिटी बाहर जिवो हला करिकि देखाओ इन द मीन व्हाइल लेट मी आंसर द कॉल ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ द नेचर एते पार्टी कले भी सेटो की सोईची की बुटिका की
कलो बैलेंस हला हेलो एंड वेलकम यस देखो बैलेंस आमे ओएन मेथड रे करि परिबा 7 रु 2 को गला केते चेंज हला ऑक्सीडेशन नंबर +5 5 चेंज हला चेंज तो सब बड़े प्लस चेंज 5 हला तेणु 5 टा रिड्यूसिंग एजेंट रे गुणा हला एटा हमें करछे ना ये मेथड टा ओएन मेथड टा आगे सर आगे सर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रो चेंज हला 1 फेरस रु गला फेरिक 1 एपट देखा जायनी एपटे गोटी अछि एठी जदि दीटा थांता 2 रे गुणा थांता एठी तो गोटे एमएन अछि गोटे सो चेंज हला 1 1 लिखा दरकार नहीं तेणु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो कोएफिशिएंट हला 1 रिड्यूसिंग एजेंट रो कोएफिशिएंट हला 5 बिकॉज आमे जानि छे ए भलिया रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करिया को हेले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो जति की चेंज हला ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ताको आमे रिड्यूसिंग एजेंट रे मल्टीप्लाई करिवा एंड रिड्यूसिंग एजेंट रे जति की चेंज हला ताको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे मल्टीप्लाई करिवा उद्देश्य हला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट should be equal to total number of electrons gained कला परे तापरे हिट एंड ट्रायल तेबे हमरो एठी फेरिक सल्फेट रे जेहेतु दीटा अछि तेणु आमको लागुची 2 2 होया पई आमे एठी रेशियो टाको मेंटेन करिया पे एठी 2 एठी 10 कर दबा काहे कि ना 5 हेले एठी 5/2 करिया पड़िबो ओले किछ कथा नै नॉट दैट आमे हेई परिबोनी हेई परिबो किंतु मु ताको फ्रैक्शन न करी करी मु एठी द्विगुणा कर देली 1:5 जहा 2:10 सैया कर देली 10 आयरन अच्छी माने एटी 5 फेरिक सल्फेट कली मैंगनीज 2 अच्छी माने एटी 2 मैंगनीज सल्फेट कली स्पेक्टाटर सल्फेट डाण पटे केते अच्छी देखिली एटी गोटे सल्फेट पोटासियम मिसी गलानी हां 2 टा दरकार थिला कारण पे पोटासियम पाई मध्य सो पोटासियम दी मिसी गलानी मैंगनीज मिसी गलानी आयरन 5 दुणे 10 मिसी गलानी सल्फेट गुडा बेकारिया लोक को देखिबा केते अछि एपटे गोटे एठी दीटा एठी 5 3 15 टा 15 2 17 1 18 टा सेठू एठू निजे 10 टा खाली फेरो सल्फेट रे अछि तेणु आउ 8 कर देले सल्फेट आयन संख्या हे गला माय प्रिंसेस माय sleep it's still not morning see mama is sleeping okay I was talking with my granddaughter okay हला तबे तापरे सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन हला परे हाइड्रोजन एठी 8 2 जा 16 हाइड्रोजन एठी 8 करियो पड़ियो हला कि नहीं अरे बुझिलो ना बुझिलोनी आगे सर तबे करथिलो को माने करथिलो এই লাইন রে को मान जाइतले अवश्य जो माने एठी 15 लिखि जो सेठी 5/2 करियो पड़ियो एठी पोटेशियम सल्फेट रे हाफ करियो पड़ियो केते फ्रैक्शन बहुत करियो पड़ियो तेणु करी मु देखली एठी K2 अछि आ एठी 5 रहिले एठी 5/2 करियो पड़ियो तेणु चालो एठी रेशियो टा डबल कर दबा 2:10 कर देले एठी 5 हे गला एठी ऑटोमेटिकली पोटेशियम हे गला तापर मु सल्फेट आयन को मेकअप कली तापर हाइड्रोजन को मेकअप कली स्वयं बुझिलो आज्ञा सर स्वयं हला तापर हम जानि गलु तम तापर कर भाग माप होची 2:10 और 1:5 2 मिलीमोल बा 1 मिलीमोल खाइबो 5 मिलीमोल बस चलला गाड़ी आ कोन ताल वर्तमान KMnO4 रो दीटा को डेटा देइची सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 केते भारला तार वॉल्यूम इनटू मोलारिटी वॉल्यूम इन मिलीलीटर होची 100 ml
जने लिटर नेले नंबर ऑफ मोल्स बाहरिबो 100 इंटू मोलारिटी देइची 1/5 ताले हला केते 20 मिलीमोल निया जाइची KMnO4 ताले भाग माप देखो यदि 1 मिलीमोल KMnO4 खाउची 5 मिलीमोल फेरस सल्फेट ताले हमर 20 मिलीमोल खर्च होईची KMnO4 ताले केते मिलीमोल से खाइथियो Yes, 100 मिलीमोल 100 20 गुणन 5 100 मिलीलीटर से खाइथिबो मिलीलीटर मिलीलीटर कहूँ मिलीमोल खाइथिबो मिलीमोल इज रिलेटेड टू मास सो वर्तमान जना पड़ी गला केते मिलीमोल फेरस सल्फेट खाइछि फेरस सल्फेट रे मोलारिटी देइछि 0.1 m तेणु जदि मोलारिटी इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय मिलीलीटर और मोल्स बाय लीटर तेबे लीटर मिलीलीटर इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय मोलारिटी सो मिलीमोल्स बाहरला 20 ए केते बाहरला मिलीमोल्स केते बाहरला 100 ना मिलीमोल्स बाहरला फेरस फेरस सल्फेट रे सल्फेट 100 तार मोलारिटी देइछि 0.1 ताले कौन हो अरे मिलीलीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय मोलारिटी कहना नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू मोलारिटी 1000 मिलीलीटर तेणु एटा 1/10 हेले 1000 1000 ml बा गोटे लीटर लागिवो बाबा गोटे लीटर लागिवो 0.1 m कारण एटा एटा 0.2 5 दुणे 10 एटा 0.2 एटा 0.1 एवं सेटा 5 गुणा खाउची की कोन करियो से गोटे मोल को से 5 मोल खाउची गोटे मिलीमोल को से 5 मिलीमोल खाउची तेणु सेही अनुसार हमर हेई गला तार 1000 मिलीलीटर जदि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन 0.1 मिलीलीटर हबो ताहले से कंप्लीटली रिड्यूस करिवो 100 ml ऑफ M/5 KMnO4 बुझिलो कि नहीं रेज योर हैंड्स को माने बुझिलो एटा हला से एसिड बेस हो कि जहा भी हो तार मूल मंत्र तेणु तुबे आमे आउ टिके एडवांस अंक करिया पूर्वरु एइटा को आमे टिके देखिबा एटा टिके पढ़ो सुमित एंड स्वप्निल separately carried out experiments to find out the volume of dilute hydrochloric acid solution required to react with a sample of 0.57 gram of aluminium a sample जोटी sample देखुथबो सेटा जानि जीवो जे एटा impure तेणु से डाटा तुम यूज करिवार नाही अन्य डेटा रु बाहर करियो पड़िबो तार प्योर एल्युमिनियम केते अच्छा सुमित फील्ड द ब्यूरेट ए ब्यूरेट देखैछि एटा सुमित्र फील्ड द ब्यूरेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अप टू 0 मार्क से 0 मार्क थिला देखैनी ऊपर ऊपर को करिनी से 0 मार्क नैथिला ही प्लेस्ड 0.57 ग्राम ताकू जो एल्युमिनियम सैंपल मिलिथिला एल्युमिनियम इनटू द कोनिकल फ्लास्क सेटा हला तार एनालाइट सेटा को सॉल्यूशन कलानी बेले बेले डायरेक्टली आमे गोटे नौ टाइट्रेंट बेले बेले डायरेक्टली सॉलिड तळे रखी करी रिएक्शन करू ताकू सॉल्यूशन से होइनी थर मेटल टा कोन सॉल्यूशन होबो 0.57 gram of aluminum powder into the conical flask and then slowly added the acid burette ru से चित्र देनी ब्यूरेट एटा ब्यूरेट रे गोटे पार्ट किंतु से चित्र देनी तळे अछि कोनिकल फ्लास्क रे से 0.57 ग्राम नेछि सैंपल ऑफ एल्युमिनियम सेटु पकेले भुरभुर हेकरी हाइड्रोजन बाहरिबो then slowly added acid until the reaction was complete indicated by no effervescence पकेला माने भुरभुर हे बाहरिबो धीरे धीरे पकुथबो देखिबो जेतेबेले आ बाहरु ने इंडिकेटर आप हे परिबोनी मेटल टरे कोन इंडिकेटर दबो इंडिकेटर होची इवोल्यूशन एफरवेसेंस जो भरभर हेकरी बाहरिबा बुदु बुदन भुरभुर हेकरी जो बाहरिबा ताकु एफरवेसेंस सेटा बंद हे जिबा पर्यंत ऐड कला त माने आसी गला इक्विवेलेंस पॉइंट बा एंड पॉइंट आसी गला शेष होई गला
the leftmost panel is से देइछि बुरेट रीडिंग आसीगला एठु पडिबो तो 0 रे थिला आगुरु कहिछि फाइनल रीडिंग हला 17.1 सो 17.1 माइनस 0 तार ता टाइटर वैल्यू होछि 17.1 ml से खाइला कोन एथरे कोन नैथिला एथरे नैथिला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाइला का संगरे ना एल्युमिनियम सैंपल संगरे रिएक्शन कला अच्छा स्वप्निल एपटे कौन कला ना इज एक्सपेरिमेंट विथ 0.57 ग्राम से का फ्रॉम द सैंपल बट with a different sample of hydrochloric acid से एका ताकू 0.57 ग्राम एल्युमिनियम सैंपल एका नहीं थिला से सेम सैंपल लिखा है सेम सैंपल सोर्स लिखा है देखो किंतु आ गुटे मोलारिटी रो नहीं थिला ये जोटा नहीं थिला से सेटा नहीं नथिला यार भी तो मोलारिटी दिया ही नहीं तार आ गुटे मोलारिटी a different sample. The middle panel in the diagram reveals his initial burette reading. तार किंतु 0 रे नथिला तार initial reading थिला 2.6 এবং finally सरीला stating the physical states of all chemicals ना कुआड गला हां and the rightmost panel reveals the final burette reading सेटा हला 13 point exactly 5 so tighter value हला 13.65 minus 2.6 15 6 गले 9 2 रे 0 गले 0 1 तेणु यार स्वप्निल रो टाइटर वैल्यू हैला एतिकी यार टाइटर वैल्यू हैला 17.1 सी गोटे अलगा एसिड यूज करछि ये गोटे अलगा एसिड समान किंतु तार कंसंट्रेशन अलगा राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द टाइट्रेशन करबा माने तमे कर सारला पर इक्वेशन बैलेंस करके करबो देखो एल्युमिनियम प्लस HCl कौन हबो ना AlCl3 प्लस H2 तो एठी बैलेंस करियो खले एठी 3 करी करी एठी 3/2 करबा काहे की तापरे 2 2 गुणी करी 2Al plus 6HCl will give rise to 2AlCl3 plus 3H2 तेणु रिलेशनशिप होची 1:2 मोल रेशियो रिलेशनशिप होची 2:6 बा 1:3 सेटा हमर दरकार हला फर्स्ट पार्ट चली गला use the information provided to complete the following table record volumes to the nearest point 1 हमर से nearest point 1 देछि हो ए जो कैलिब्रेशन देछि से point 1 पर्यंत जाई परिबो सुमित्र एक्सपेरिमेंट रे फाइनल बुरेट रीडिंग होची 17.1 एटा 0 थिला इनिशियल थिला 0 तळे अछि न फेडिबा को असुविधा हो 17.1 फाइनल तेणु वॉल्यूम ऑफ एसिड एटा हला टाइटर वैल्यू ता कोनती टाइटर वैल्यू एटा 17.1 यार इनिशियल रीडिंग थिला 2.6 तळे लिखियो पडियो से कहूची तो फेडिबा को सुविधा हो एंड एटा हला 13.5 एटा हला केते 9 10.9 हला तारो तारो टाइटर वैल्यू ता एसिड रो बोला द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड used by Sumit in the experiment से दे दीजिए जरा हो सुमित 3.5 m मोल पर DMQ माने लीटर 1 DMQ is equal to 1000 cc that is equal to 1 liter डेसीमीटर क्यूब माने गोटे लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब सो एटा हला सुमित्र मोलारिटी दे दीजिए was the concentration of the acid used by the concentration of acid used by Sumit in the experiment was what? What was the concentration of the acid by Swapnil experiment if both titrations were done accurately? वर्तमान तुमको चिंता कराला केमती करिवो सुमित्र किंतु एसिड रो मोलारिटी दे दीची हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो मोलारिटी 3.5 दे दीची केमती करिवो मते कुह
हम्म ଟିକେ ये खोलो विस्मय रथे सर सुमित्र एक्सपेरिमेंट रे केते एल्युमिनियम यूज होला बाहर करी स्वप्निल एक्सपेरिमेंट यस करके। यस आगुरु कहिछि एल्युमिनियम सैंपल टा जो 0.57 ग्राम दिया जाइछि सेटा शुद्ध अशुद्ध माने इम्प्योर तेणु सुमित्र एक्सपेरिमेंट रु आमे केते ग्राम प्योर एल्युमिनियम सेथरे अछि जणा पड़िबो एवं एक्जाक्टली सही सैंपल दिया जाइछि आकु स्वप्निल को तो ऑटोमेटिकली स्वप्निल रो आमे मोलारिटी बाहर करि परिबा काहे तार टाइटर वैल्यू आमे जानि छै चलो सुमित एक्सपेरिमेंट रे बाहर करिबा केते एल्युमिनियम 2Al + 6HCl तापरे छाड़ मार गोली एटा जा हो हमरा ए दीटा भितरे ताले 2 मोल खाउची 6 मोल दा 2 * 27 खाउची 6 मोल एठी मोल लेखली जानी करी एठी ग्राम बाहर करबा यार तो मु मोलारिटी नहीं एटा कोनो सॉल्यूशन नुए अच्छा यार गुणी देबा सुमित्र दीटा को गुणी देबा वॉल्यूम एठी लीटर करबा कारण मोल एका कथा एठी 6000 भी कले हबो आमे तो हीरो मार्का लोक 6 मोल को एठी 6000 कर दवा चालो हम तो मिलीमोल लोक मिलीमोल सुमित्र जो बाहरला ये केते मिलीलीटर बाहरला सुमित्र 17.1 तो सुमित्र 17.1 इंटू 3.5 तार मोलारिटी गुणिल केते होची ता गुणिल आखरे गोटे रख ये Sir, 59.85. एतिकी तेणु जति मिलीमोल हैला ताले एतिकी जदि एतिकी दउची 6000 मिलीमोल जदि एतिकी खाउची ताले 59.85 मिलीमोल केते खाइबो बाहर करो 2 * 27 / 6000 इंटू 59.85 सो केते ग्राम प्योर एल्युमिनियम निश्चित भाव रे से खाइथिबो जोटा कि 0.57 ग्राम ऑफ द इम्प्योर सैंपल रे थिबो सेटा निश्चय 0.57 रु कम होबो यदि न होबो हमरो कैलकुलेशन भूल अछि मैक्सिमम 0.57 हे पारे 0.538 0.538 ग्राम एटा हला प्योर एल्युमिनियम वर्तमान चालो जानी गला परे सही सैंपल नेइछि किए ना आर टोका स्वप्निल स्वप्निल रो इक्वेशन तो सही है ना इक्वेशन तो सही है सो सही 2 * 27 ग्राम खाइबो से 6000 एटा होची भाग माप मिलीमोल ताले बर्तन उल्टा करबा एतिकी जदी खाउची एतिकी मिलीमोल ताले 0.538 ग्राम खाइबो केते मिलीमोल एटी 6000 विभक्त को 2 * 27 इंटू 0.538 इते बाहरला देखो केते मिलीमोल से खाइबो देखो एटा 9 10th भितरे पडुची तुमे सिना 10th पार ही जो वर्तमान तो परीक्षा दबार नहीं तो देखो तेणु आमको पिला बाहर करिया Sir, पड़ियो तमे सिना केम 59.77. हां केते Sir, 59.77. ठीक अछि तो स्वयं एटा Address, sir. 59.85 एटा भी सही फिगर बाहरला यस सर 59.77। ओके एतिकी मिलीमोल से खाइची किंतु तारो टाइटर वैल्यू दैची 10.9 तेणु मोलारिटी केते मोलारिटी इज इक्वल टू मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर सो 59.77 वॉल्यूम इन मिलीलीटर होची तारो टाइटर वैल्यू 10.9
10.9 हिसाब करो केते मोलार मु स्वागत जनाऊँ जो माने वर्तमान यूट्यूब रे व्यू करूचंती सेमान को मु स्वागत जनाऊँ यूट्यूब रे ठीक ठाक चलची तो आज यूट्यूब रे गंडोल अच्छी बोली से लिखुची किंतु आपण माने ठीक देखि पारुचंती तो एक चैट बॉक्स रे लिखि दो नांती हां ठीक चलची खाली सर ओके लिखि दियंतु ओके 5.48 यस तार मोलारिटी होची 5.48 एम सी 3 पॉइंट समथिंग नहीं थिला 3.5 एम नहीं थिला ये पाखा पाखी 5.5 एम सॉल्यूशन यूज करिची तो जिनसटा कोन डिफिकल्ट की मते कुओ स्वयं बुझि पारलो आज्ञा सर ना कुंथई की कहउछ ठीक करी बुझलो ना नहीं आज्ञा सर आ परे कहिछि से सरी नहीं गोटे प्रॉब्लम 13 मार्क टी एटा होछि 13 मार्क रो क्वेश्चन था आफ्टर completing the experiment and removing the conical flask from tip of the burette, Swapnil observed his burette was started leaking. Swapnil ro burette leak କରୁଛି as he had not properly closed the stopper of the burette. Burette बंद करनी बाकी जो थिला गलुची. He closed the stopper properly to stop leak. Leak को बंद कला and observes reading once again. आउथर reading आरंभ कला. It was approximately additional 11% of the volume consumed in the earlier. Earlier रे जो volume 10.9 खर्च होइतला तार 11% नष्ट होई गला तेणु तार संगे 0.11 गुणी देले केते तळे पड़ी गला जणा पड़ी गला तेबे से एइठु आरंभ करिवो देखिवा से कोन करूची देखिवा टू कीप टेबल क्लीन to take leaked acid had fallen on the table to keep table clean neat and tidy he puts excess sodium bicarbonate संगरे से पड़ी तार कौन ऊपर अच्छी से नहीं ऊपर कौन नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तले पड़ी ताकू खाई जीवो सी ताकू न्यूट्रलाइज करिया को संगे संगे से सोडियम बाइकार्बोनेट ता ऊपर पकेला सोडियम बाइकार्बोनेट होची बेसिक आज आउ टिके तुमको कहबी जोटा ये करिथिला मिस्टर विस्मय त्रिपाठी प्रकृति मु भी फील कली आउर किछि इन्फॉर्मेशन तुमको दबा कथा मु देबी से ताकू न्यूट्रलाइज करिया पई से सोडियम बाइकार्बोनेट आदरे पकेला सुमित checked the pH of resultant mixture by pH paper देखिला कौन है सुमित इन द मीन वाइल हाँ एटा पर स्वप्निल करूची एटा पागला गुडा तो हाँ से साहाଯ୍य कला सांग तार सुमित चेक्ड पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर by pH paper write the balance chemical reaction between hydrochloric acid and sodium bicarbonate जो देखो तले जो रिएक्शन टा हेची सेटा लेखो एठी एठी मु लिखुची तमे सेठी लेखनी तमे NaHCO3 प्लस HCl कौन हबो ना NaCl प्लस कौन हबो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट रू कौन बाहर अयो सर H2O plus CO2 CO2 प्लस वाटर बैलेंस हेई कि अछि ना CO2 प्लस H2O हेई कि अछि बैलेंस हेई कि अछि हैला तापर से एक नंबर गला what minimum quantity of sodium bicarbonate in gram is required to nullify the effect of spilled acid spilled acid केते कहलो जो तळे पड़ी गला से होची आगुरु जो टाइटर वैल्यू रो 11% ये देखो 11% of the volume consumed in earlier reaction तार 10.9 consume हेची so 10.9 रो 11% माने 0.11
केते आसिला गुण 10.9 into 0.11 सेतिकी मिलीलीटर 1.19 मिलीलीटर 1.19 मिलीलीटर गली पड़ला एवं तार मोलारिटी होची 5.49 ना कोन बाहर करथिलो तार मोलारिटी होची 5.48 ऑलरेडी बाहर कर सारलणी एतिकी रे गली गला ताको गुणी देले केते मिलीमोल गली गला जणा पड़ी गला तापर स्टोकियोमेट्री करबा देखो ताको गुण ए जागा नाही एठी मु गुणुची 1.19 into 5.48 केते मिलीमोल तळे पड़ी गला मिलीमोल ऑफ HCl dropped is equal to तार मिलीलीटर एवं तार मोलारिटी ऑलरेडी आमे जानि सारलेनी एक्सपेरिमेंट करिकी पूर्व दीटारू केते हला 6.52 मिलीमोल 6.52 मिलीमोल ताल वर्तमान भाग माप देखो गोटे मिलीमोल खाउची गोटे मिलीमोल तबे मिलीमोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट भी सेति की NaCO3 कारण यदि 2:1 हेतांता 2 रे गुणा हेतांता किंतु एठी तो स्टोकियोमेट्री कहूची 1:1 तेणु 6.52 मिलीमोल HCl को आइबो 6.52 मिलीमोल सोडियम बाइकार्बोनेट तार मास को कन्वर्ट करो वर्तमान मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू मिली को मारिबा 6.52 मिली को मारिबा को हेले 1000 रे हरो इनटू तार मोलार मास सोडियम बाइकार्बोनेट रो 23 युक्त 1 युक्त कार्बन 12 16 3 48 एमथि हला 106 ए सॉरी 84 आई एम सो सॉरी 84 उस तार मोलार मास हिसाब कलो 6.52 मिली को मारिले मोल कले एवं तन तार मोलार मास रे गुणिले सो केते ग्राम से पचारुची सोडियम बाइकार्बोनेट दरकार हबो कंप्लीटली नॉलिफाई करिया को हेले एसिड को 0.54 ग्राम ठीक अछि तो 0.54 ग्राम एतिकी एल्युमिनियम सॉरी एल्युमिनियम कोच मो सोडियम बाइकार्बोनेट पकेबा को पड़िबो हेले HCl जो पड़िची केते मिलीमोल ना 6.52 मिलीमोल केते मिलीलीटर ना 1.19 मिलीलीटर तार मोलारिटी केते ना 5.48 ताकू न्यूट्रलाइज कर दबो हैला देखो 3 नंबर पचर छी फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी ऑफ एल्युमिनियम सैंपल से कोउ काळू पचरेबा कथा एबे पचर तो जे कोनसी डेटा नियो 0.538 बारला बाय टोटल टा देजी 0.57 into 100 एटा हला परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी केते बारला एटा कोउ काळू आमी जानि सारलु सैंपल रे 0.57 ग्राम सैंपल रे 0.538 ना केते बारथिला क्यों अरे केते बारथिला 0.54 0.538 हाँ so 0.538 by 0.57 into 100 so percentage of purity केते 90 ऊपर निश्चय रहइबो 4.38 94.38 so एतो को सारी गला सॉरी नी गोटे लोक तार मुंडो खराब हे जो कि केते सहज से पुनी टू चेक द प्रोसेस वर्क्स गुड on the other metals both took the same amount of sample of pure zinc एथर को pure zinc वर्ड यूज हला आउ एथरे खादो नाही instead of aluminum and carried out the titration process ब्यूरेट अछि एनालाइट ता सॉल्यूशन हुए एनालाइट ता मेटल कोई बात नहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करछो गोटे गोटे टाइट्रेंट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करछो माने सेटा टाइट्रेशन रे जीवो so one of the two reactants has to be a solution with some molarity the other one might be a solution or might not be a solution maybe a pure solid so write the balanced equation mentioning the physical state between zinc powder and hydrochloric acid तो solution थिला एटा zinc टा होची solid एवं how many times Sumit and Swapnil need to dilute their own acid solutions so as to get burette readings for the reaction with zinc 10 ml ये पाइबो and Swapnil respectively what ता लिखा ही नहीं
तो मुंड टायल धरलानी नहीं टायल धरलानी अरे मुंड टायल धरलानी कि 6:30 ରୁ 8:30 हवा कथा आम बसचे 7:30 ये घंटे मत है ना ना मो घंटा है 1.5 घंटा हवा बसला 8टा पाखापाखि हवा बसला देख सी वर्तमान 0.57 ग्राम प्योर जिंक नेले केते कंफ्यूज करियो देछि सेठी नैथिले इम्प्योर एल्युमिनियम एठी प्योर जिंक नेला एवं से कहूची से जो 3.5 मोलार थिला स्वप्निल रो ए सॉरी सुमित्र 5.5 पाखापाखि थिला स्वप्निल रो ताकू पानी मिसै के डाइल्यूट केते कले हाउ मेनी टाइम्स माने डाइल्यूशन फैक्टर टा कले यार 10 ml दरकार हबो 0.57 प्योर जिंक को सारिबा पई यार 15 ml दरकार हबो आगो देखि दबा जे जागा नहीं मु करिवि कोन अच्छा हो एठी करूची वर्तमान सुमित 0.57 प्योर जिंक से रिएक्शन करिवो इक्वेशन आउ स्वप्निल भी करिवो सही किंतु कोथरे करिवो ना उडा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रे करिवो 3.5 m डाइल्यूटेड केते डाइल्यूट करिया पड़ो केते गुणा माने धर 10 टाइम्स डाइल्यूट कले एटा बाय 10 हे जिवो 20 टाइम्स डाइल्यूट कले बाय 20 हे जिवो ता कोनती डाइल्यूशन फैक्टर सेतिकरे हरि देले तार न्यू पानिचिया मोलारिटी बाहर जिवो डाइल्यूशन फैक्टर हरि देले अच्छा वर्तमान हमें चलो बाहर करिबा ये केते मोलारिटी लागिवो स्वप्निल और सही 0.57 ने आइछि किंतु प्योर जिंक तार थिला 5.48 ना कोन थिला है ताकू डाइल्यूट करिया पड़ियो हमको चलो हमें सुमित्र काम करिबा जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2 एटी 2 करिया पड़ियो हमको तेणु मिला गला 2 करिया पड़ियो तेणु हम जरी जदी तार जिंक रो मोलार मास से देछि बोधे निश्चय देथियो ओ एपोर्ट बरा जिंक रो मोलार मास से मूलु देछि क्वेश्चन रे जे क्वेश्चन तार देछि सब एटॉमिक मास उडा को दे देछि से 65.5 65.4 तो 5 केम करिया 4 65.4 तेणु भाग माप कहूची 65.4 ग्राम खाऊची गोटे 2 मोल्स ता माने 2000 मिलीमोल्स ताहले 0.57 ग्राम प्योर खाइबो केते 2000 मिलीमो बाई 65.4 इंटू 0.57 तो केते मिलीमोल खाऊची तुम्हें ये जो ग्रुपटा वैभव मिसची बहुत भल लगुच आटा गोटे भल कॉम्बिनेशन जो मानकर पूरा पेशेंस रही जो माने एडवांस लेवल रे पढ़िया मन अच्छी so that will definitely help you in your +2 even I can guide you in chemistry आजकल तो पूरा पूरी गाइड करुची 17.43 17.43 74 17.43 17.43 17.43 नहीं एतिकी मिलीमोल्स अच्छा तार मिलीलीटर से केते खाइबो कहूची से एमितिया पानी चिया करिवो सेथुरु 10 मिलीलीटर खर्च होबो
जदि वॉल्यूम टा हला 10 मिलीलीटर सेमतिया दरकार मो मिलीमोल्स हला एतिकी तो से भलिया पानीचिया सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते हबो नंबर ऑफ मिलीमोल 17.43 बाई 10 केते Sorry, 1.74 केते 1.743. 1 पॉइंट 1.743. कि गोटे खसी गला वैभव ता ना को से खसी गला से डिफिकल्ट अच्छा 1.7 अच्छा वर्तमान आगुरु ओरिजिनल सॉल्यूशन केते थिला ओरिजिनल सॉल्यूशन रो मोलारिटी थिला 3.5 एम एटा एतिकी ताको हरि देला माने डाइल्यूशन फैक्टर बाहरिबो डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू केते टाइम्स डाइल्यूट करा जिवो इज इक्वल टू 3.5 बाय 1.743 सो सेतिकी गुणा ताको डाइल्यूट करिया पड़ियो सेतिकी टाइम्स ताको डाइल्यूट करिया पड़ियो पानी भी सही करी केते गुणा डाइल्यूट करिया पड़ियो Sir, 2.0, 2. रखा पके 2 टाइम्स नहीं Again. आउ यार देखिबा स्वप्निल सेही एका इक्वेशन एका तार से यूज करूची अलगा कंसंट्रेशन 5.48 सेही 65.4 ग्राम 2000 ग्राम 2000 मिलीमोल सॉरी ताहले तार से पॉइंट एका जिंस लिखिली कहीं के जाने सही एमती ना एमती सेही मिलीमोल एका बाहरला 17.43 किंतु तार जेहेतु मिलीमोल्स तार जेहेतु तार जेंति मोलारिटी ओरिजिनल मोलारिटी थिला 5.48 एम ताहले हां आर बाहर करिया पड़ियो ताकू केते मिलीलीटर लागिची ताकू केते मिलीलीटर लागिची 20 ना कोन Sir, को 15 बोधे. 15 ताकू 15 मिलीलीटर ताकू लागिची तार जो डाइल्यूट से कला ताकू 15 मिलीलीटर लागुची देखो केते गोटे एग्जामिनर केते समय भाबी करी क्वेश्चन करथिबो मिलीलीटर लागिची ताले पानीचिया मोलारिटी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मोलारिटी केते हबो ना 17.43 बाय 15 केते हला सही 1 पॉइंट समथिंग हबो आर बी 1 पॉइंट 1.16 1.743 एटा 1 पॉइंट केते 1.16 1.16 एम ये तार ओरिजिनल थिला 5.48 एम ओरिजिनल ताले डाइल्यूशन फैक्टर केते हला 5.48 Sir, by 1.4. 1.16 5. हां Again. Again. केते केते Again. 4.72 4.72 टाइम्स तो डाइल्यूट करियो पड़ियो तो आउ कंटिन्यू करिवा हमें काली किंतु मु टिके एसिड बेस रो किति उडा को जिंस टिके सार दे पळेबा आउ आउ दीटा दीटा तीनटा प्रॉब्लम काली करिवा जोथरे कि डाइल्यूशन अंक करिवा तो तमर गोटे कॉन्फिडेंस आसीबा मोलारिटी ऊपर आउरी अंक किछि करिवा तो आगुरु कोन होतला इक्विवेलेंट कांसेप्ट गोटे को होतला जे प्रति सब्सटेंस रो गोटे इक्विवेलेंट मास अछि सेटा मोलार मास बाय सम फैक्टर जो फैक्टर रे आमे जो 5 जो चेंज हलानी पोटेशियम परमैंगनेट रो ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन रे +7 रु +2 को गला चेंज हला 5 सेटा हला फैक्टर तेणु पोटेशियम परमैंगनेट रे तार मोलार मास रे 5 हरिले तार इक्विवेलेंट मास हबो सेम जहार जति की बैलेंस धरो मेटाथेसिस रिएक्शन रे तार तार वैलेंसी जति की सेति हरले तार इक्विवेलेंट मास हबो रिडॉक्स रिएक्शन रे जति की चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हला किबा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ आयन हरिले सेटा तार इक्विवेलेंट मास हबो ए तार से एन ताकुई कहंती फैक्ट एन फैक्टर से मोलार मास रे एन फैक्टर हरिले तार इंडिविजुअल इक्विवेलेंट मास बाहरिबो तर इक्विवेलेंट मास
को नेइकरी जदि सॉल्यूशन करिवो ताकू कोनती नॉर्मल सॉल्यूशन 1 इक्विवेलेंट mass or 1 gram equivalent of any substance in 1 liter is called 1 normal 1n solution. Eta 1 mole in 1 liter la molar solution 1m. 0.5 mole in 1 liter 0.5 m. सेम तार 1 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट धर सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास हम 49 तार दीटा हाइड्रोजन अछि तेणु ता एज ए एसिड हिसाब रे काम करिवो जदी तार नियम होची तार जति रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दीटा ताको हरियो पड़िवो सो 98 by 2 49 होसर इक्विवेलेंट मास तेणु तुम जदी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन करिवो ताले 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लिटर सॉल्यूशन तयारी करिवो यदि 0.1 n करिवो ताले 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लिटर सॉल्यूशन करिवो किंतु 1 मोलार करिवा को हेले 98 ग्राम पर लिटर 0.1 मोलार करिवा को हेले 9.8 ग्राम पर 1 मोल तेणु नॉर्मालिटी अनुसार सॉल्यूशन कले कोन हबो तार आउ इक्वेशन बैलेंस करिवा पड़िवोनी तार स्लोगन होची ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इक्विवेलेंस ए स्लोगन टा गाइथिली केते बेले बोधे नुए No, no, sir. नो तेणु जे कोनोसी रिएक्शन यार गोटे इक्विवेलेंट हेले तार गोटे इक्विवेलेंट खाइबो यार जदी 0.1 इक्विवेलेंट तार 0.1 इक्विवेलेंट सो सेति पे स्लोगन होची ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इक्विवेलेंस तेणु आर v1 into तार नॉर्मलिटी v1 n1 is equal to v2 n2 आउ दरकार नै इक्वेशन लिखिबा किछि करिबा तेणु यार वॉल्यूम देइछि तार नॉर्मलिटी देइछि ताकू गुणी देले नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बाहरला एटा मिली मोल तेणु मिली इक्विवेलेंट बाहरला तार वॉल्यूम देइछि नॉर्मलिटी देइनि तेणु v1 n1 is equal to v2 n2 कर देले गोटे अननोन बाहर जिवो because all chemical reactions takes place in equivalence किंतु यार प्रॉब्लम कोन सिंगल रिएक्शन रे चलिबो टाइट्रेशन रे किंतु मल्टीपल स्टेज रिएक्शन रे कोन हबो सेही सब्सटेंस टा गोटा जगह मेटाथेसिस रिएक्शन रे करूथबो ता पई इक्विवेलेंट मास रो बाहर करिवार पद्धति अलगा सेटा नेक्स्ट रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट हे जोथबो तार एन फैक्टर टा अलगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज तेणु पिला माने सेटा जानि परिबेनी जते बेले ताकू तळु फॉलो करी ऊपर को आसीबे सेतल को को एन फैक्टर नैथिबे दिकल को आउ गुडा एन फैक्टर हबो तेणु बहुत भूल भाल आंसर आसीबो मल्टीपल माने मल्टी स्टेप रिएक्शन रे तेणु करी पाश्चात्य देश रे आउ केही इक्विवेलेंट कांसेप्ट यूज करू नाहंती जोटा इंडिया रे चाली छि एटा मु तुमको केतल कहिबी मे बी परवर्ती काल रे किंतु मु मोलारिटी जिंदाबाद टिके बैलेंसिंग करिया को पड़िबो किंतु भूल होबार नाही ताकू ता परवर्ती धर जोटा प्रोडक्ट हला ताकू नेकरी नेक्स्ट रिएक्शन रे रगा हला तार प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन रे सो मोलारिटी वाइज कले किछि प्रॉब्लम हबो नाही तुम भाबु छ आज एठी सारीबा हमर कंटिन्यूएशन करिबा केमिस्ट्री किछि कथा नै तुमे गोटे दिन रे आमे तमे सब पढ़ी सारलानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्कूल रे पढ़ा सारलानी नो माने सर स्कूल मैग्नेटिज्म आउ जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तापरे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोटर रो प्रिंसिपल लेफ्ट हैंड रूल जनरेटर रो प्रिंसिपल राइट हैंड रूल एटा सब पढ़ा सरलन ना पढ़ा हेनी नहीं सर पढ़ाई तले सेटा करबा की फालतू यस सर एटा आज्ञा एठी छाड़ दवा एठी उडा आईडिया पाई गलो ना कोन एठी आईडिया पाइलो बहुत उडा सर यार क्वेश्चन छाड़ देबे ग्रुप पे कोन आउ अधिका किछि करिया पे तो आज्ञा आउ किछि ट्राई करिया पे हां आज्ञा न कले मु तुम डाउट्स क्लियर करबी त काल टू फिजिक्स आरंभ कर दवा फिजिक्स आरंभ कले केमिस्ट्री भी चली थिबा जो डाउट उडा थिबो करथिबा आउ बढ़िया बढ़िया करथिबा किंतु सेटा आरंभ कर दवा हम हाथ रे आउ गोटे एक्स्ट्रा दिन रहिले काली को छाड़ देला गोटे एक्स्ट्रा दिन रहिले आमे केमिस्ट्री फिजिक्स जहा पट सपोर्ट मो माइंड रे थिबो कहबी तुम डाउट्स मते पचारियो हला आज्ञा आज 8 रखिबा बाय बाय आ जो माने ये रे सुनुचंती से माने किभली सुनुचंती आज मु टिके आज डाउटफुल अछि हमर ये रे आ सुनुचंती कि नाही सेटा मु कहि पारु नै
किंतु शुणुथिबे बोली मोर आशा एवं भरोसा आउ कौन हला सेटे मु कुआडे पाउनी के टिके एनालिटिक्स ना एनालिटिक्स आसला एई कुआडे गला ताको पुणी बंद करिवि ना सर यूट्यूब रे लाइव हाँ दो हाँ बंधुगण आपण मानकु मु विदाय नउछि आपण मानक थारु विदाय नउछि जो माने यूट्यूब रे देखुचंती बा देखिबे आ जदि भल लागिबो ताहले hit the like button and if you have not subscribed subscribe to my channel bye bye ए तुमे रुह मु सर प्रणाम बाय बाय मु ये यूट्यूब रे कहूछि हाँ वर्तमान तुमको हाँ हाँ हला आउ किछि कहबो ना काल देखा ताले प्रणाम आज्ञा सर Yes, प्रणाम प्रणाम धन्यवाद सर प्रणाम।